इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक electrostatic Coulomb's law, electric field and potential field due to a uniform charged sphere, derivation of position and Laplace equation, Gauss law and its application, the field of a conductor, electric dipole field and potential due to an electric dipole approximation for an arbitrary charge distribution, electric quadrupole field due to quadrupole, electrostatic energy of a charge uniform sphere, energy of a conditioner, magnetostatic magnetic field, magnetic force of a current, magnetic induction and Biot-Savart law, Lorentz force vector and scalar magnetic potential, magnetic dipole, magnetomotive force and Ampere circular theorem and its application due to calculate the magnetic field due to the wire carrying current and solenoid, electromagnetic induction, law of induction, Faraday's law and Lenz law, mutual and self induction, vector potential in varying magnetic field, induction of current in continuous media, spin effect, motion of electrons in charging magnetic field, Betatron magnetic field in field induced magnetic field, time varying electric field, displacement current, Maxwell equation, theory and working of moving coil, ballistic galvanometer, unit third, dielectric constant polarization, electronic polarization, atomic or ionic polarization, charge, electrostatic equation with dielectric field, force and energy in dielectric, magnetic properties of matter, intensity of magnetization and magnetic susceptibility, properties of dia, para and ferromagnetic materials, Curie temperature, hysteresis and its experimental determination, unit 4, electromagnetic waves, the wave equation satisfied by E and B plane, electromagnetic wave in vacuum, Poynting vector, reflection at a plane boundary of dielectric, polarization by reflection and total internal reflection, Faraday effect, wave in a conducting medium, reflection and refraction by the ionosphere. Detail unit 1, chapter vector and coordinate system, vector algebra, scalar and vector, unit vector, addition and subtraction vector, multiplication of vector, position and distance vector, cosine and sine of an angle between two vectors, cosine of angle between two vectors, sine of angle between two vectors, coordinate system and their transformation, Cartesian or rectangular coordinate system x, y, z, circular cylindrical coordinate system r, theta, z, spherical coordinate system r, theta, phi, differential length, area and volume, Cartesian coordinate system, cylindrical coordinate system, spherical coordinate system, vector integration, line, surface and volume integral, line integral, surface integral, volume integral, del operator, gradient of a scalar function, the divergence, the curl, Laplacian of a scalar field, types of vector field, lamellar field are solenoidal and irrotational field, irrotational but not solenoidal field, solenoidal but not irrotational field, neither irrotational nor solenoidal field, Gauss divergence theorem, Stokes theorem, importance. Chapter 2, electrostatic, Coulomb's law, continuous charge distribution, the electric field strength, electric field due to continuous charge distribution, electric flux, Gauss law, application of Gauss law, charge conducting plate, infinite plane, sheet of charge, electrical intensity due to the uniform charge sphere, point charge, isolated uniform charge spherical conductor, charge cylindrical conductor of infinite length, electric field intensity between oppositely charged parallel plate, electrified soft bubbles, charge loop, charge disk, Coulomb's theorem, electric field potential, electrostatic potential, potential in spherical spatial case, electric dipole in electric field, work done and potential energy on a dipole in an electric field, current density and equation for
continuity, expression for current density, equation of continuity, relaxation time, electric field and potential due to an electric dipole, multiply poles equation, quadrupole interaction energy, dipole interaction, Poisson and Laplace equation, uniqueness theorem, Green's reciprocity theorem, solution of Laplace equation in Cartesian coordinate, solution of Laplace equation in spherical coordinate, solution of Laplace equation in cylindrical coordinate, electrostatic energy of a charged uniform sphere. Chapter 3, magnetostatic introduction, Ampere's law of force between current element, magnetic force, magnetic material and devices, force on a charged particle, force on a electric current element, force between the two current elements, field due to a current carrying conductor, Biot-Savart law, force between two very large parallel conductor, magnetic field due to steady current in a large strand wire, magnetic field along the axial of circular loop or coil, field due to solenoid, magnetic field at the center of a current circular loop, divergence of field B vector, Ampere's law, magnetic scalar and vector potential, derivation of Biot-Savart law and Ampere law using magnetic vector potential, magnetic torque and magnetic moment, magnetic dipole, magnetization in material, Biot-Savart law, Ampere circular law, Maxwell equation, application of Ampere's law, infinite line current, infinite sheet of current, infinite long coaxial transmission line, magnetic flux density, Maxwell equation are static field. Unit 2, chapter electromagnetic induction introduction, Faraday law of electromagnetic induction, time varying magnetic field, self induction, unit of cell induction, L, energy stored in magnetic field, energy stored up in solenoid, energy density, mutual inductance, unit of mutual inductance, reciprocity theorem, relation between mutual and self induction, energy stored in two interacting circuit, magnetic scalar and vector potential, expression of magnetic vector potential, time varying potential, Betatron, Maxwell equation for static field, equation of community of for varying field, Maxwell modification to Ampere circular law for time varying field, displacement current, Maxwell equation in vacuum, Maxwell equation in vacuum in the presence of charge and current, Maxwell equation in isotropic linear dielectric media, phasor notation and sinusoidal time variation, Maxwell equation in phasor form, Maxwell equation, proof of Maxwell equation, moving coil, ballistic galvanometer, current sensitivity, charge sensitivity or quantity sensitivity, voltage sensitivity, figure of merit and of galvanometer. Unit 3, chapter dielectric and magnetic properties of material, introduction, electric field intensity or electric field strength, electric flux density or electric displacement vector, dielectric parameter, dielectric constant, electric dipole, polarization, polarizability, types of polarization, electronics or induced polarization, atomic or ionic polarization, dipolar or orientation polarization, interfacial or space charge polarization, total polarization, effect of polarization on a dielectric material, local or internal field, calculation of internal field for solid dielectric, types of dielectric material, solid dielectric material, liquid dielectric material, gaseous dielectric material, Clausian equation, dielectric loss, dielectric breakdown, string breakdown, thermal breakdown, electrochemical breakdown, dielectric discharge breakdown, defect breakdown, ferroelectric material, hysteresis, dielectric properties, field, force and energy in dielectric, magnetic properties of matter, magnetic dipole and dipole moment, magnetic flux density, magnetic field strength, magnetization of or intensity of magnetization, different type of magnetic material, atomic material, atomic material, ferromagnetic material, antiferromagnetic material, ferromagnetic material,
Langevin theory of paramagnetism, classical theory, quantum theory of paramagnetism, magnetization curves, RBH curve, ballistic methods of plotting hypothesis curve, hypothesis laws are every laws during magnetism. Unit for electromagnetic wave, introduction, electromagnetic wave propagation, wave in general, uniform plane wave properties, electromagnetic wave equation in phasor form, wave propagation in a conducting medium, plane wave in good conductor, plane wave in lossless dielectric, plane wave in free space, Poynting theorem, electromagnetic energy, Poynting vector, reflection of a plane wave at normal incident, reflection of a plane wave at oblique incident, total internal reflection, propagation of electromagnetic wave through ionosphere, field strength, the ionosphere, reflection of ionosphere, Faraday effect. Chapter 1, Vector and Coordinate System, Vector Algebra. Electromagnetic in regarded as the study of interaction between electric charge at rest and in motion. It is analysis, synthesis, physical interpretation and application of dielectric and magnetic field separately or in a conjunction. So we can say that electromagnetic in a branch of physics or electronics, electrical engineering, in which electric and magnetic behavior are studied. Electromagnetic has many applications in various fields such as satellite communication, microwave, waveguide, antennas, filters, electric mechanics, plasma, fiber optics, radar technology, remote sensing, etc. Electromagnetic fields are also used in induction heater and melting, forging, annealing, soldering, etc. Electromagnetic device include transformer, remote, telephone, mobile transmission line, waveguide, filter, antennas, optical fiber, radars, etc. Through knowledge of law and principle of electromagnetic and required for the design and fabrication of this device. To start with the electromagnetic, we will start with the vector coordinate system and various laws giving these vectors. These are essential part of electromagnetic. Scalar and vector. Vector analysis is very important mathematical tools with which electromagnetic concepts are easily expressed and understood. This is so because most of the fundamental quantities of electromagnetic are inherently vector in nature. So before start the electrostatic or magnetostatic, we will study few concepts of scalar and vectors. Scalar. A scalar is a quantity that has only magnetic, for example time, distance, mass, temperature, etc. Vector. A quantity is said to be a vector if it has both magnitude and direction and follow the law of parallelogram. For example, vector, displacement, force, it is electric field intensity, magnetic field intensity, etc. Field. A function that specify a particular quantity anywhere in a region is called field. Depending upon the nature of the quantity described the field, it can be scalar or vector. Field can be scalar or vector depending on the type of quantity of the field under consideration. For example, temperature distribution in a room, intensity of sound in a cinema hall, electric potential in a region are scalar field, while electric field intensity in a region, gravitational force on a body in space are example of vector field. Unit vector, addition and subtraction of vector. Let us consider a vector having both magnitude and direction. The magnitude of vector a vector is mod of a vector or simply a which is scalar quantity. Unit vector of a vector and along a vector is defined as a vector whose magnitude is
one and has the direction along vector a vector, so a cap is equal to a vector बटा mod of a vector is equal to a vector बटा के a. इक्वेशन नंबर 1, a vector is equal to a into a cap. Do thus the vector a vector could be written as magnitude of a vector multiplied by its unit vector a cap. Let us now consider vector in the components form x y z a सब इसमें x I कैप a वेक्टर a सब इसमें z k कैप a सब इसमें y j कैप x y z p क्वेश्चन में x y z. फिगर 1.1 वेक्टर a वेक्टर इन ए कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम विथ its component a सब इसमें x y and a सब इसमें z along x y and z direction respectively. Unit vector I कैप j कैप and k कैप in cartesian coordinate system. Thus vector a vector is a Cartesian or rectangular coordinate system can be written as a vector is equal to a सब इसमें x I कैप प्लस a सब इसमें y j कैप प्लस a सब इसमें z k कैप. 3 here a सब इसमें x सब इसमें y and a सब इसमें z are known as component of a vector and I कैप j कैप and k कैप are called the unit vector in x y and z direction respectively. The magnitude of a vector is given as mod of a vector is equal to a is equal to under root में a सब इसमें x square plus a सब y square plus a सब z square and thus the unit vector along a vector is given as a cap is equal to a सब इसमें x I cap plus a सब इसमें y j cap plus a सब इसमें z k cap बटा के अंडर रूट में a सब इसमें x a स्क्वायर प्लस a सब इसमें y स्क्वायर प्लस a सब इसमें z का स्क्वायर. समीकरण नंबर 5. नाउ इफ देयर आर टू वेक्टर्स a वेक्टर एंड b वेक्टर गिवन एज a वेक्टर इज इक्वल टू a सब इसमें x I कैप प्लस a सब इसमें y j कैप प्लस a सब इसमें z k कैप. समीकरण नंबर 6 एंड b वेक्टर इज इक्वल टू b सब इसमें x I कैप प्लस b सब इसमें y j कैप प्लस b सब इसमें z k कैप. 7. then two vector can be added to give another vector c vector whose components will be the sum of the respectively components of a vector and b vector, that is c vector is equal to a vector plus b vector is equal to क्वेश्चन में a इसमें x I कैप प्लस a इसमें y j कैप प्लस a इसमें z k कैप. क्वेश्चन 1 प्लस b सब इसमें x I कैप प्लस b सब इसमें y j कैप प्लस b सब इसमें z k कैप इक्वल टू a सब इसमें x प्लस b सब इसमें x. क्वेश्चन 1 I कैप प्लस a सब इसमें y प्लस b सब इसमें y j कैप प्लस a सब इसमें z b सब इसमें z k कैप. c वेक्टर इक्वल टू c सब इसमें I कैप प्लस c सब इसमें y j कैप प्लस c सब इसमें z k कैप. समीकरण नंबर 8. Similarly, subtracting of two vectors can be given as d vector is equal to a सब इसमें x I कैप प्लस a सब इसमें y j कैप प्लस a सब इसमें z k कैप. क्वेश्चन 1 दूसरे क्वेश्चन में माइनस b सब इसमें x I कैप प्लस b सब इसमें y j कैप प्लस b सब इसमें z k कैप इक्वल टू a सब इसमें x माइनस b सब इसमें x. क्वेश्चन 1 I कैप प्लस दूसरे क्वेश्चन में a सब इसमें y माइनस b सब इसमें y. क्वेश्चन 1 j कैप प्लस a सब इसमें z b सब माइनस b सब इसमें z k कैप. d vector is equal to d सब इसमें x I कैप प्लस d सब इसमें y j कैप प्लस d सब इसमें z k कैप. समीकरण नंबर 9. Addition of two vector is commutative and associative, that is a vector plus b vector is equal to b vector plus a vector. Commutative a vector plus क्वेश्चन में b vector plus c vector is equal to a vector plus a vector plus b vector. क्वेश्चन 1 दूसरा क्वेश्चन प्लस c vector. Associative क्वेश्चन नंबर 11. but the subtraction is not commutative, that is a vector minus b vector not equal to b vector minus a vector. Multiplication of vector, there are two way in which a vector could be multiplied. A vector is multiplied by a scalar, a vector is multiplied by another vector. Here again we have two ways, namely scalar multiplication of two vector and the vector multiplication of two vector. Scalar multiplied to a vector. Any vector a vector could be multiplied by any scalar a as a into a vector is equal to a क्वेश्चन में a सब इसमें x I कैप प्लस a सब इसमें y j कैप प्लस a सब इसमें z k कैप. a स्मॉल a बड़का a वेक्टर इसको a सब a स्मॉल a सब इसमें x I कैप प्लस a स्मॉल a सब इसमें y j कैप प्लस a सब इसमें z k कैप. thus in this case each component of vector a vector is multiplied by scalar vector. Multiplication of two vector, as it is said above, we have two way multiplication of any two vector a vector and b vector, that is scalar or dot product a vector into b vector, vector or cross product a vector cross b vector. Scalar or dot product of two vectors. The scalar or dot product of two vector a vector and b vector, a vector dot b vector is defined geometrically as the product of magnitude of a vector and b vector and cosine of the angle between them. Therefore a vector into b vector is equal to a b cos theta, where theta is the angle between a vector and b vector.
Also, if a vector is equal to a subscript x I cap plus a subscript y j cap plus a subscript z k cap, scalar multiplying to a vector. Any vector a vector could be multiplied by any scalar a, as a into a vector is equal to a question में a subscript x I cap plus a subscript y j cap plus a subscript z k cap. A into a vector is equal to a into a subscript x I cap plus a subscript y j cap plus a subscript z k cap. समीकरण नंबर 12. Thus, in this case, scalar multiplied to a vector. Any vector a vector could be multiplied by scalar a vector is equal to a into a vector is equal to a सिस्टम में a सबस्क्रिप्ट में x I cap plus a सबस्क्रिप्ट y j cap plus a सबस्क्रिप्ट z k cap. स्मॉल a vector is equal to a स्मॉल a सबस्क्रिप्ट में x I cap plus a सबस्क्रिप्ट में y j cap plus a सबस्क्रिप्ट में z k cap. Thus, in this case, each components of a vector is multiplied by the scalar number. Multiplication of two vector, as it is said above, we have two way of multiplication of any two vector a vector and b vector, that is scalar r dot product a vector into b vector, vector r cross product a vector cross b vector, scalar r dot product of two vector. The scalar r dot product of two vectors a vector and b vector a vector dot b vector is defined geometrically as the product of magnitude of a vector and b vector and cosine of the angle between them. Therefore, a vector dot b vector is equal to ab cos theta, where theta is the angle between a vector and b vector. Also, if a vector is equal to a subscript x I cap plus a subscript y j cap plus a subscript z k cap, and b vector is equal to b subscript x I cap plus b subscript y j cap plus b subscript z k cap, then a vector into b vector is equal to क्वेश्चन में a subscript x I cap plus a subscript y j cap plus a subscript z k cap. क्वेश्चन में दूसरे क्वेश्चन में b subscript x I cap plus b subscript y j cap plus b subscript z k cap. A vector into b vector is equal to a subscript x b subscript x plus a subscript y b subscript y plus a subscript z b subscript z. Here we know that I into I cap into I cap is equal to j into cap into z cap is equal to k cap into k cap is equal to 1, and all other cross term are 0. That is I cap into j cap is equal to j cap into k cap is equal to I cap into k cap is equal to 0. Thus, we can say that the resultant of dot product is a scalar quantity, and this could be obtained by multiplying the respective components of two vector and adding them. Properties of scalar product. पहला, the two vector and are said to be perpendicular are orthogonal to each other if a vector into b vector is equal to 0. समीकरण नंबर 15. दूसरा, scalar product in commutative, that is a vector into b vector is equal to b vector into a vector 16. तीसरा, scalar product is distributive, that is a vector into क्वेश्चन में b vector plus c vector क्वेश्चन 1 is equal to a vector into b vector plus a vector into c vector 17. दूसरा, वेक्टर आर क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, द वेक्टर आर क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, आई ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज ए वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज द एरिया ऑफ द पैरेललोपाइप्ड फॉर्म बाय द वेक्टर ए वेक्टर एंड बी वेक्टर एंड इट in the direction of perpendicular to the plane containing a vector and b vector, and is given by right hand screw rule as shown in figure 1.2. A vector cross b vector, a vector b vector theta, the vector or cross product of a vector and b vector is a vector which with magnitude equal to the area of parallelogram and direction direction in upward as indicate. Therefore, a vector cross b vector is equal to a b sin theta n cap, where n cap is the unit vector normal to the plane containing vector a vector and b vector. The direction of n cap is the taken as the direction of right hand thumb when the figure rotate from vector a vector and to vector b vector as shown in figure 1.3. Also, the direction n cap could be determined by advance of a right hand screw as vector a vector is turned towards vector b vector as shown in figure. A vector cross b vector, a vector cross b vector, right hand screw rule, direction of a vector cross b vector and n cap using right hand rule. As we can see from equation 18 that the result of the cross product of two vectors a vector and b vector is also a vector, so this type of multiplication is also called the vector product. Now, if a vector is equal to a subscript x I cap plus a subscript y j cap plus a subscript z k cap and b vector is equal to b subscript x I cap plus b subscript y j cap plus b subscript z k cap,
देन वेक्टर प्रोडक्ट इज ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल टू क्वेश्चन में ए सफिक्स में एक्स आई के प्लस ए सफिक्स में वाई जे के प्लस ए सफिक्स जेड के क्वेश्चन वन क्रॉस दूसरे क्वेश्चन में बी सफिक्स में एक्स आई के प्लस बी सफिक्स में वाई जे के प्लस बी सफिक्स में जेड के इक्वल टू ए सफिक्स में एक्स बी सफिक्स में वाई क्वेश्चन में आई कैप क्रॉस जे कैप क्वेश्चन वन प्लस ए सफिक्स में एक्स बी सफिक्स में जेड क्वेश्चन में आई क्रॉस के कैप प्लस ए सफिक्स में वाई बी सफिक्स में एक्स क्वेश्चन में जे कैप क्रॉस आई कैप प्लस ए सफिक्स में वाई बी सफिक्स में जेड क्वेश्चन में जे कैप क्रॉस के कैप क्वेश्चन वन प्लस ए सफिक्स में जेड बी सफिक्स में एक्स क्वेश्चन में के कैप क्रॉस आई कैप क्वेश्चन वन प्लस ए सफिक्स में जेड बी सफिक्स में वाई क्वेश्चन में के कैप क्रॉस जे कैप सिंस आई कैप क्रॉस आई कैप इक्वल टू जे कैप क्रॉस जे कैप इक्वल टू के कैप क्रॉस के कैप इक्वल टू 0 एंड आई कैप क्रॉस जे कैप इक्वल टू के आई कैप क्रॉस के कैप इक्वल टू माइनस जे कैप एंड सो ऑन. So regarding rearranging and putting all value in box equation, we get a vector cross b vector equal to a suffix में y b suffix में z minus a suffix में z b suffix में y question वन I cap plus a suffix में z b suffix में x minus a suffix में x b suffix में z question वन j cap plus a suffix में x b suffix में y minus a suffix में y b suffix में x question वन k cap are simply a vector cross b vector equal to I j k ए सफिक्स में बी सफिक्स में वाई ए सफिक्स में जेड बी सफिक्स में बी सफिक्स में वाई बी सफिक्स में 19. प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर प्रोडक्ट टू वेक्टर आर सेड टू बी पैरेलल इफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल टू 0. 20 वेक्टर प्रोडक्ट इन कम्यूटेटिव दैट इज ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर नॉट इक्वल टू बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर बट ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल टू माइनस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर 21. तीसरा वेक्टर प्रोडक्ट इज नॉट एसोसिएटिव दैट इज ए वेक्टर क्रॉस क्वेश्चन में बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर क्वेश्चन वन नॉट इक्वल टू क्वेश्चन दूसरे क्वेश्चन में एक वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्वेश्चन वन क्रॉस सी वेक्टर 22. चौथा वेक्टर प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव दैट इज ए वेक्टर गुणे क्वेश्चन में बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर क्वेश्चन वन इक्वल टू ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर. 23. पोजीशन एंड डिस्टेंस वेक्टर any point P may be represented by question में x, y, z in Cartesian coordinate system. Thus the position vector r vector also known as the radius of point P in the directed distance from the origin say O, that is r vector equal to op vector equal to x I cap plus y j cap plus z k cap. 24. Let us consider that is x equal to 1, y equal to 2 and z equal to 3. Then the position vector will be r vector equal to 1 I cap plus 2 j cap plus 3 j cap as shown in figure 1.5. P question में 1, 2, 3 x equal to 1, y equal to 2, z equal to 3. Now we define the distance vector as the distance vector is a displacement from one point to another. Let us consider 2 point P and Q given question में x, y, x1, y1, z1 and x2, y2, z2 respectively. Then the distance vector also called separation vector is the displacement from P to Q as shown in figure 1.6. That is for question में x, y, z as 1, 2, 3 the position vector r vector is equal to 1 I cap plus 2 j cap plus 3 k cap. PQ vector is equal to r suffix में 1, 2 vector is equal to r2 vector minus r1 vector is equal to x2 minus x1 question 1 I cap plus y2 minus y1 question 1 j cap plus z2 minus z1 question 1 k cap. P question में x1, y1, z1 r12 vector PQ question में x2, y2, z2 r2 r1 O distance vector r suffix में 1, 2 vector. Cosine and sine of angle between two vectors. Cosine and sine of angle between two vectors could be defined in terms of scalar product and vector product of two vectors respectively. Cosine of an angle between two vectors. Let us consider two vector a vector and b vector whose components are a suffix में x, a suffix में y, a suffix में z and b suffix में x, b suffix में y, b suffix में z respectively along the three dimension. Now a vector is equal to a suffix में x I cap plus a suffix में y j cap plus a suffix में z k cap. A b vector is equal to b suffix में x I cap plus b suffix में y j cap plus b suffix में z k cap. B 26. Therefore a vector into b vector is equal to a suffix में x, b suffix में x plus a suffix में y plus into a b suffix में y plus a suffix में z, b suffix में 27. Also a vector into b vector is equal to mod of a vector mod of b vector cos theta. 28.
Thus, the cosine of angle between two vectors in terms of scalar product is cos theta is equal to a vector into b vector बटा के mod of a vector mod of b vector cos theta is equal to a suffix में b suffix में plus a suffix y b suffix y plus a suffix z b suffix में बटा के अंडर रूट में a suffix में x का स्क्वायर प्लस a suffix में y का स्क्वायर प्लस a suffix में z का स्क्वायर दूसरे क्वेश्चन में b suffix में x स्क्वायर b suffix में y का स्क्वायर b suffix में z का 29. Here we put the value of a vector into b vector from the equation 27 mod of a vector is equal to अंडर रूट में a suffix में x स्क्वायर प्लस a suffix में y स्क्वायर प्लस a suffix में z स्क्वायर एंड mod of b vector is equal to अंडर रूट में b suffix में x स्क्वायर प्लस b suffix में y स्क्वायर प्लस b suffix में z स्क्वायर. Sine of angle between two vectors. Now using equation 26, the vector product of two vector a vector and b vector could be given as a vector cross b vector is equal to mod of I cap j cap k cap a suffix में a suffix में a suffix z b suffix में b suffix में y b suffix में z. 30 a vector cross b vector is equal to mod of a vector mod of b vector sin theta. 31 thus the sine of angle between two vectors in terms of vector is sin theta is equal to a vector cross b vector बटा के mod of a vector mod of b vector sin theta is equal to mod of I cap j cap k cap a suffix में x a suffix में y x suffix z b suffix में b suffix में y b suffix में z बटा के अंडर रूट में a suffix में x स्क्वायर प्लस a suffix में y स्क्वायर प्लस a suffix में z स्क्वायर अंडर रूट में b suffix में x स्क्वायर b suffix में y स्क्वायर b suffix में z स्क्वायर. Thus the angle theta between two vectors can be calculated. Coordinate system and their transformation. In electromagnetic we can come across unique structure quite often which are of various shape and size and are function of shape and time. In order to describe the spatial variation of these quantities we require to define all points in the space in a suitable manner. Thus we need a proper coordinate system. Of this purpose a point or vector in space could be represented in any curvilinear coordinate system which may be orthogonal or non-orthogonal. If the coordinates of curvilinear system are mutually perpendicular to each other then they are known as the orthogonal system. Otherwise as a non-orthogonal system. Non-orthogonal system are out of scope of these books. Cartesian are rectangular, circular, cylindrical, spherical, elliptic, cylindrical, parabolic, cylindrical, conical, etc. are the example of orthogonic coordinate system. For our purpose we will discuss Cartesian, circular, cylindrical and spherical coordinate system and the transformation of one to other coordinate system in the chapter 1.4.1 Cartesian or rectangular coordinate system x, y, z. We discussed much about this system and used this quite often, so we will not discuss in the much detail of this system. Let us consider a point P represent point x, y, z in Cartesian coordinate system as shown in figure 1.7. The limit of coordinates variable x, y, z and z is the system. Minus infinity is less than x is less than infinity, minus infinity is less than y is less than infinity, minus infinity is less than z is less than infinity. 34 other things will remain as same discussed previously. Z into p x, y, z o x, y represent a point P in Cartesian coordinate system. Circular cylindrical coordinate system r, theta and z. For electric and magnetic field of nature of cylindrical symmetric it is good to deal with cylindrical coordinate system. A point P is in a cylindrical coordinate system could be represented by r, theta, z as we can represent the same point x, y, z in Cartesian coordinate system. Figure 1.8 so the point P in cylindrical coordinate system. Here r is the radius of cylindrical passing through P or the radial distance from the z-axis and r cap is the radial unit vector in a radially outward direction. Theta in the azimuthal angle, the angle of the line joining the point P with the z-axis and its unit vector is theta cap which is tangential of the circumference and z is the same as that the Cartesian coordinate system. Z direction with unit vector z cap. In this system the limit of the variable r, theta and z are given as 0 is less than or equal to r is less than infinity, 0 is less than theta is less than 2 pi, minus infinity is less than z is less than infinity.
A vector is the cylindrical coordinate system can be represented as a vector is equal to a sub इसमें r cap plus s theta cap plus s z cap 36 where a sub इसमें r comma a sub theta and a sub z are the component of the vector. A vector in the r comma theta and z direction respectively, and r cap comma theta cap and z cap are the unit vector in r comma theta and z direction respectively. These unit vectors are mutually perpendicular and follow the same rule as that of the Cartesian coordinate system in respect to the scalar and potential vector multiplication, that is r cap dot theta cap is equal to r cap dot z cap is equal to theta cap dot z cap is equal to 0. R cap dot r cap is equal to theta cap dot theta cap is equal to z cap dot z cap is equal to 1. R cap cross theta cap is equal to z cap comma theta cap cross z cap is equal to r cap z cap cross r cap is equal to theta cap. 37. The relation between the cylindrical coordinate system and the Cartesian coordinate system could be given as r is equal to under root में x square plus y square comma theta is equal to theta tan inverse y by x and z is equal to z. The and inverse relation r x is equal to r cos theta comma y is equal to r sin theta and z is equal to z. Thus, equation 38 is used to transform Cartesian coordinate system to cylindrical coordinate system, and equation 39 from cylindrical to Cartesian system. Thus, the relation between two coordinate system could be represented by figure 1.9. x y z p कोष्टक में x comma y comma z is equal to p कोष्टक में r comma theta comma z, x is equal to r cos theta, y is equal to r sin theta, illustrative of relation between x comma y comma z and r comma theta comma z. Also, the relation between unit vector I cap comma z cap comma k cap and r cap comma theta cap comma z cap are the two coordinate system could be given as I cap is equal to cos theta r cap minus sin theta theta cap, z cap is equal to sin theta r cap plus cos theta theta cap, k cap is equal to z cap 40, and the inverse transformation r cap is equal to cos theta I cap plus sin theta j cap, theta cap is equal to minus sin theta I cap plus cos theta j cap, z cap is equal to k cap 41. Therefore, the relation between Cartesian vector components system a sub s comma a sub y comma a sub z and cylindrical vector component a sub r comma a sub theta comma a sub z could be given as a sub r is equal to a sub x cos theta plus a sub y sin theta, a sub theta is equal to minus a sub x sin theta plus a sub y cos theta, a sub z is equal to a sub z. Thus, the cylindrical coordinate vector a vector is system r comma theta comma z in the term of Cartesian coordinate vector a vector system x comma y comma z could be written as a vector question में r comma theta comma z is equal to a sub s cos theta plus a sub y sin theta question 1 r cap plus minus question में minus a sub s sin theta plus a sub y cos theta question 1 theta cap plus a sub z cap 43. This transformation could be easily be written as understood in terms of matrix, that is a sub में r comma a sub theta comma a sub z is equal to cos theta sin theta 0 minus sin theta cos theta 0 0 0 1 a sub s a sub y a sub z. This is the transformation matrix of convergence of Cartesian of cylindrical coordinate system. The inverse transformation matrix of conversion of cylindrical to Cartesian system could be given as a sub s comma a sub s a sub y a sub z is equal to cos theta minus sin theta 0 sin theta cos theta 0 0 0 1 के खाते minus 1 a sub s r a sub y theta a sub z और a sub s a sub y a sub z is equal to question में cos theta sin theta 0 minus sin theta cos theta 0 0 0 1 a sub s r a sub theta a sub z. Spherical coordinate system r comma theta comma phi, it is most appropriate to use spherical coordinate system when the electric and or magnetic field are spherical symmetric. A point P in the spherical coordinate system could be represented by question में r comma theta comma phi with figure 1.10, so that r is the distance from the origin to the point P, r the radius of the sphere center and at the origin and passing through point P, and r cap is the radial
unit vector pointing radially outward direction theta is called the colatitude, and it is the angle between the z-axis and the radial vector of p has theta cap, and the unit vector which point tangential to the radius vector at p and psi is the azimuthal angle from z-axis to the perpendicular drawn from the point P on xy plane with its unit vector phi cap, which represented the direction of increasing of psi and point P x y z इतना represent of a point in spherical coordinate system, and unit vectors the limit of these coordinates in the spherical coordinate system could be given as 0 is less than or equal to r is less than infinity, 0 is less than or equal to theta is less than or equal to pi, 0 is less than or phi is less than or 2 pi. Thus a vector in the spherical coordinate system can be written as a vector is equal to a subscript में r cap plus a subscript में theta cap plus a subscript में phi cap 47, where a subscript में r comma a subscript में theta and a subscript में phi are the components of the vector a vector in r comma theta and phi direction respectively. R cap comma theta cap and psi cap are the unit vector in the r comma theta and phi direction respectively in spherical coordinate system. Full stop. These unit vector are mutually perpendicular to each other and follow the same rule that of the Cartesian of cylindrical coordinate system in respect of the vectors and scalar and vector multiplication, that is r vector into theta cap is equal to r cap into phi cap is equal to theta cap into phi cap is equal to 0, r cap into r cap is equal to theta cap into theta cap is equal to psi cap into psi cap is equal to 1, r cap cross theta cap is equal to psi cap, theta cap cross psi cap is equal to r cap, psi cap cross r cap is equal to theta cap. Now the relation between the spherical coordinate system and the Cartesian coordinate system could be given as r is equal to under root में x square plus y square plus z square, comma theta is equal to tan inverse under root में x square plus y square बटा के z, psi is equal to tan inverse y by x 49, and the inverse relation r x is equal to r sin theta cos phi, comma y is equal to r sin theta sin phi, comma z is equal to r cos theta 50. Thus the equation 49 is used to transform the Cartesian coordinate system to be to the spherical coordinate system, and the equation 50 transformation of spherical to Cartesian coordinate system. This transformation is illustrated in figure 1.11. Z is equal to r cos theta, p कोष्ठक में r comma theta comma phi, p कोष्ठक में x comma y comma z, r theta z y psi, x is equal to r sin theta cos phi, y is equal to r sin theta sin phi x, illustrative of relation between x comma y comma z and r comma theta comma phi. Now the relation between the unit vector I cap comma z cap comma k cap and r cap comma theta cap comma psi cap of the two coordinate system could be given as I cap is equal to sin theta cos phi r cap plus cos theta cos phi theta cap minus sin phi cap, j cap is equal to sin theta sin phi r cap plus cos theta sin phi theta cap plus cos phi phi cap, k cap is equal to cos theta r cap minus sin theta theta cap, and the inverse transformation could be given as r cap is equal to sin theta cos phi I cap plus sin theta sin phi j cap plus cos theta k cap, theta cap is equal to cos theta cos phi I cap plus cos theta sin phi j cap minus sin theta k cap, psi cap is equal to minus sin psi I cap plus cos psi j cap 52. Therefore the relation between the Cartesian vector component कोष्ठक में a subscript में s comma a subscript में y comma a subscript z and spherical vector component a subscript में r comma a subscript में theta comma a subscript में psi could be given as a subscript में r is equal to a subscript में x sin theta cos phi plus a subscript में y sin theta sin phi plus a subscript z cos theta, a subscript में theta is equal to a subscript में x cos theta cos phi plus a subscript में y cos theta sin phi minus a subscript में z sin theta, एक subscript में psi is equal to minus a subscript में x sin phi plus a subscript में y cos phi 53. Thus the spherical coordinates vector a vector कोष्ठक में r comma theta comma phi psi in terms of Cartesian coordinates vector a vector कोष्ठक में x comma y comma z could be written as
ए वेक्टर क्वेश्चन में आर कामा थीटा कामा साई इक्वल टू एस में एक्स साइन थीटा कास फाई प्लस एस में वाई साइन थीटा साइन फाई प्लस एस में जेड कास थीटा क्वेश्चन आर कैप प्लस एस में एक्स कास थीटा कास फाई प्लस एस में वाई कास थीटा साइन फाई माइनस एस में जेड साइन थीटा क्वेश्चन थीटा कैप प्लस माइनस क्वेश्चन में एस में एक्स साइन फाई प्लस एस में वाई कास फाई क्वेश्चन फाई चौवन दिस ट्रांसफॉर्मेशन could be easily be written and understood in terms of matrix form that is s में r s में theta s में psi is equal to sin theta cos phi cos theta cos phi minus sin phi sin theta sin phi cos theta cos sin phi cos phi cos theta minus sin theta 0 s में y s में 55. This is the transformation matrix for Cartesian or to spherical coordinate system. The inverse transformation matrix from cylindrical to Cartesian system could be given as 56. एस में कमा एस में वाई कमा एस में जेड साइन थीटा कास फाई साइन थीटा साइन फाई कास थीटा कास फाई साइन थीटा साइन फाई माइनस साइन थीटा कास फाई 0 एस में आर एस में थीटा एस में फाई 56. डिफरेंशियल लेंथ एरिया एंड वॉल्यूम. नाउ वंस वी हैव स्टडीज द वेक्टर अलजेब्रा एंड कोऑर्डिनेट सिस्टम वी विल डिस्कस वेरियस वेक्टर कॉन्सेप्ट टू visualize electric, magnetic or electromagnetic field in this shape and size. We represent various 1, 2 and 3 dimensional quantities in 3 coordinate system. For this we start our discussion with differential length, area and volume. Cartesian coordinate system differential displacement is given at dl वेक्टर इक्वल टू displacement dx I का प्लस dy j का प्लस dz k का. दूसरा डिफरेंशियल एरिया इन जो गिवन है ds वेक्टर इक्वल टू dy dz I का प्लस dx z j का प्लस dx dy k का. डिफरेंशियल वॉल्यूम इज गिवन है dv इक्वल टू dx dy dz. सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम डिफरेंशियल डिस्प्लेसमेंट इन जो गिवन एज dl वेक्टर इक्वल टू dr I का प्लस d थीटा r d थीटा का प्लस dz z का 60. डिफरेंशियल एरिया इन गिवन है ds वेक्टर इक्वल टू r d थीटा dz r का प्लस dr dz थीटा का प्लस r d थीटा dr z का 61. डिफरेंशियल वॉल्यूम इन गिवन है dv इक्वल टू dr इंटू r थीटा r d थीटा इंटू dz इक्वल टू r dr d थीटा dz. 62. स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम डिफरेंशियल डिस्प्लेसमेंट इज गिवन एज dl इक्वल टू dr r का प्लस r d थीटा का प्लस r साइन थीटा d फाई थीटा साई का 63. दूसरा डिफरेंशियल एरिया इज गिवन है ds वेक्टर इक्वल टू r d थीटा r साइन थीटा d साई r का प्लस dr r साइन थीटा d साई थीटा का प्लस dr r d थीटा साई का. ds वेक्टर इक्वल टू r स्क्वायर d साइन थीटा d थीटा डी साई आर का प्लस आर साइन थीटा डी आर डी साई थीटा का प्लस आर डी थीटा साई का 64. तीसरा डिफरेंशियल वॉल्यूम इज गिवन है डी वी इक्वल टू डी आर थीटा आर साइन थीटा डी फाइव डी वी इक्वल टू आर स्क्वायर साइन थीटा डी आर डी थीटा डी साई 65. It should be noted that differential displacement and surface volume vector while volume is a scalar quantity. Vector integration, line surface and volume integral. Line integral, the integrals of a point function along a curve is called the line integral. Also the integral is the integrals of tangential component of a vector along that curve. Let r vector is equal to r vector of r being the equation of a curve as shown in figure 1.12. If phi and v vector are the scalar and vector field respectively and dA r vector is the vector increment and length along the curve length, possible integral are pq समाकलन phi dr vector which is a vector quantity, pq a vector into dr which is a scalar quantity, pq a vector cross dr which is a vector quantities. Each of these integral being line integral along the curve PQ full stop. The curve PQ may be open or closed. Let us consider that phi is the vector function of cosine x, y, z and dr is equal to I dx
आई कैप डी एक्स प्लस जे कैप डी वाई प्लस के कैप डी जेड, देन समाकलन पी क्यू डी फाई डी आर इक्वल टू सी फाई क्वेश्चन एक्स कामा वाई कामा जेड क्वेश्चन वन डी एक्स आई कैप प्लस समाकलन फाई क्वेश्चन एक्स कामा वाई कामा जेड डी वाई जे कैप प्लस समाकलन सी फाई क्वेश्चन एक्स कामा वाई कामा जेड डी जेड के कैप 66. The three integrals on right hand side are ordinary scalar integrals. The integrals with respect to x cannot be evaluated unless y and z are known as in terms of x, and similarly for the integrals with respect to y and z, this means that the path of integration pq must be specified. Now the line integral pq समाकलन pq a vector into dr vector is most commonly used in a vector analysis, and it is called the line integral of tangential component of vector a vector along the curve pq. For a given vector field a vector and a curve pq, we may define the line integral as समाकलन pq a vector into dr vector is equal to समाकलन p to q माडा पे वेक्टर कास थीटा डी आर 67. If the path of integration is a closed curve as shown in figure 1.13, then the line integral becomes the closed counter integral, that is समाकलन closed integral a into dr vector curve representation of closed curve pqp. This is the called the circulation of a vector around closed path pq. Here we can note that if समाकलन a vector into dr vector is equal to 0, then there exists a scalar point function phi such that a vector is equal to gradient psi. Gradient of a scalar function will be discussed in the next section. This led to well known result that a vector field a vector is the said to be conservative if and only if there exists a scalar point function psi such that a vector is equal to gradient psi. Surface integral, let S be the surface divided into infinite infinitesimal element, each of which may be considered as a vector. ds vector as figure 1.14. Surface ds n cap q illustration of the flux of a vector field through the surface. Then if psi and a vector are scalar and vector field respectively, then the surface integral may be written as समाकलन double समाकलन psi ds vector, which is a vector quantity 1 समाकलन a vector into ds vector, which is a scalar quantity 2 समाकलन s a vector plus ds vector, which is a vector quantity 368. Often the elements ds vector may be written as ds vector is equal to n cap ds, where n is the unit normal vector to indicate the positive direction of the surface. If the surface is closed surface, then outward normal takes a positive. If the surface is an open surface, then the positive normal depends on the direction in which the perimeter of the open surface is transverse. In particular, the surface integral double समाकलन s a vector into ds vector is called the flow of flux of the vector function a vector through the given surface s. Volume integrals, let dv is equal to dx comma dx dy dz denotes the elements of the as shown in figure 1.15. Volume dv x y z, illustration of three-dimensional quantities with volume v is equal to x dot y dot z and differential volume dv is equal to dx comma dy dot dy dot dz. Since volume of element dv is a scalar quantity, there are only two possible ways in which volume integrals could be written as triple समाकलन v psi dv, which is a scalar quantity 1 triple समाकलन v a vector dv, which is a vector quantity 2 del operator. The del operator written as del is the vector of differential operator, also known as a gradient vector. Operator is not a vector in itself, but is an operator which behaves like a vector. In Cartesian coordinate system, it is defined as del vector is equal to deva by x I cap plus deva by j cap plus deva by z
K-cap, the del operator in cylindrical and spherical coordinate system could be written as del vector is equal to r cap deva by deva r plus theta cap 1 by r deva by deva theta plus z cap deva by deva z in a cylindrical coordinate system, and दूसरा del vector is equal to r cap deva by deva r plus theta cap 1 by r deva by deva theta plus psi cap 1 by r sin theta deva by deva psi in a spherical coordinate system. 370. This operator is useful in night the following: the gradient of a scalar field psi del vector psi, the divergence of a vector field a vector del vector into a vector, the curl of a vector field a vector is equal to del vector cross a vector, the Laplacian of a scalar field phi del square psi, gradient of a scalar function. Let's phi question x comma y comma z be the continuously differential scalar function. The gradient of scalar function phi is defined as gradient phi is equal to deva phi by deva x I cap plus deva phi by deva y j cap plus deva phi by deva z k cap. 71 is equal to question में I deva by deva x plus j deva by deva y plus k deva by deva z. question 1 phi is equal to del vector phi where del vector is equal to I cap deva by deva x plus j cap deva by deva y plus k cap deva by deva z is known as del operator. 1.7 geometrical interpretation of a gradient. Let the gradient of scalar function phi is given as del vector phi is equal to deva phi by deva x I cap plus deva phi by deva y j cap plus deva phi by deva z k cap. Like the vector gradient and the magnitude and direction, now deva by deva phi d phi is equal to del vector phi into del real vector is equal to mod of del vector phi mod of dl cos theta, where theta is the angle between del vector phi and del l. Now if we fix the magnitude del l vector and serve is various direction vary theta, the maximum change in phi evidently occur when theta is equal to 0 for cos theta is equal to 1, that is for a fixed distance del l mod of del vector d phi is the greater when we move in the same direction and del vector phi, therefore the gradient del vector phi points in a direction of maximum increased of the function phi. The magnitude mod of del vector phi gives the slope rate of increased along the maximum direction. In order word, the gradient of scalar function phi is the given is a vector whose magnitude is equal to maximum rate of change of scalar function phi with respect to the space variable and whose direction is along that change property. If phi 1 and phi 2 are scalar differentiable function, then gradient question में phi 1 plus phi 2 is equal to gradient phi 1 plus gradient phi 2, gradient phi 1 into phi 2 is equal to phi 1 gradient phi 2 plus phi 2 gradient phi 1. The divergence of a vector function a vector is given as del vector into a vector is equal to I cap del by del x plus j cap del by del y plus k cap del by del z. question 1 into I cap a space plus j cap a space y plus k cap a space z. del vector into a vector is equal to del by del a space बटा del x plus a space a del a space y बटा dy plus del a space z बटा dz. 72 divergence of a vector function a vector comma del vector comma a vector is itself a scalar. The divergence del vector into a vector is a measurement of how much the vector a vector spread out the divergence from the points in question as shown in figure 1.16. The divergence of any vector function is a region is 0. Divergence a vector is equal to 0. This means that the flux of the vector function entering any elements of region is equal to the leaving in shown in figure. Non-zero divergence point P, zero divergence field point P, also divergence a vector is equal to 0 is called solenoidal vector. In other words, the divergence of a vector field at a point is defined as the outward flux of vector field per unit volume enclosed through as infinitesimal
magnetesimal closed surface around that point. Now the divergence of a vector field is cylindrical and spherical coordinate system could be given as del vector into a vector is equal to 1 by r del by del r क्वेश्चन में r ए सब इसमें r प्लस 1 बाई r डेल ए सब इसमें थीटा बटा डेल थीटा प्लस ए सब इसमें जेड डेल ए सब इसमें जेड बटा डेल जेड इन ए सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम डेल वेक्टर इनटू ए वेक्टर इज इक्वल टू 1 बाई r स्क्वायर डेल बाई डेल r आर स्क्वायर ए सब इसमें r प्लस 1 बाई r sin थीटा डेल बाई डेल थीटा क्वेश्चन में ए सब इसमें थीटा sin थीटा प्लस 1 बाई r sin थीटा डेल ए सब इसमें 5 बटा डेल 5 in a spherical coordinate system. To understand the physical meaning of divergence of a vector field, let us consider few examples. The पहला the divergence of a fluid vector velocity v vector and a point represented the quantity of fluid flowing out per section per unit volume enclosed by infinitesimal closed surface surrounding that point. In divergence of v vector at a point represented the quantity of fluid flowing out per section per unit volume enclosed by infinitesimal closed surface surrounding that point. If divergence of v vector as a point is negative, it means that fluid is flowing towards that points and thus there exists a sink for the fluids. If divergence of v vector at a point is positive, it indicates the existence of source of the fluid at that point. दूसरा, the divergence of a current density j vector at a point is numerically equal to the quantity of electric charge flowing out per second per unit volume through as infinitesimal closed surface surrounding that point. Taking the law of conservation of charge is into consideration, divergence of j vector at any point is equal to the rate of decrease of charge density in a neighborhood of that point. Therefore divergence j vector is equal to minus डेभा रो बटा डेभा टी डाइवर्जेंस जे प्लस डेभा रो बटा डेभा टी इज इक्वल टू 0. दिस इक्वेशन इज नोन एज इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी एंड रिप्रेजेंट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज. द कर्ल ऑफ ए वेक्टर फंक्शन ए वेक्टर इज गिवन एज डेल वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर इज इक्वल टू आई कैप जे कैप के कैप डेल बाई डेल एक्स डेल बाई डेल वाई डेल बाई डेल जेड ए सब इसमें वाई ए सब इसमें जेड. डेल वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर इक्वल टू आई कैप क्वेश्चन में डेल भाई ए सब इसमें जेड बटा डी वाई माइनस डे भा ए सब इसमें वाई बटा डेल जेड प्लस जे कैप क्वेश्चन में डे भा ए सब इसमें एक्स बटा डेल जेड माइनस डे भा ए सब इसमें जेड बटा डेल एक्स क्वेश्चन 1 प्लस के कैप डे भा ए सब इसमें वाई बटा डेल एक्स माइनस डे भा ए सब इसमें एक्स बटा डे वाई. The curl of a vector function is like any cross product of two vectors. Now the curl of a vector is cylindrical and spherical coordinate system could be given as del vector cross a vector is equal to 1 by r mod of r cap r theta cap j cap del by del r a सब इसमें r del by del theta r a सब इसमें theta del by del z a सब इसमें z is a cylindrical coordinate system. r del vector cross a vector is equal to 1 बटा के r स्क्वायर साइन थीटा mod of r कैप डेल बाई डेल r a सब इसमें r थीटा कैप डेल बाई डेल थीटा a सब इसमें r थीटा r a सब इसमें थीटा r साइन थीटा फाई कैप डेल बाई डेल फाई r साइन थीटा a सब इसमें फाई in a spherical coordinate system. The curl of a vector field at any point is defined as a vector quantity whose magnitude is equal to the maximum line integral per unit area along the boundary of an infinitesimal test area and that point and whose direction is perpendicular to the plane of the test area. If a vector is the vector field at point P and del S vector an infinitesimal test area point P, then curl a vector is a point P is defined as n cap del s P del r a vector curl a vector is equal to limit del s tends to 0 समाकलन a vector into dr vector क्वेश्चन पर सफिशिएंट मैक्स del s
कर्ल ए वेक्टर इंटू एन कैप इक्वल टू लिमिट डेल एस टेंड्स टू जीरो समाकलन ए वेक्टर इंटू डी आर वेक्टर बटा डेल एस वेक्टर वेयर एन इज द यूनिट वेक्टर along the normal to the plane of test area. The curl of a vector field is sometimes called circulation of or rotation if the flood velocity vector v vector has a curl somewhere. This means that the velocity of flood over and above the general motion in a certain direction has sometimes like clockwise or anti-clockwise rotations superimposed on it. Thus existence of curl of the vector field at a point in space indicate the circulation or vorticity there. Since the line integral of a conservative field a vector around any closed path is zero is समाकलन a vector into dr vector is equal to 0. Therefore the conservative vector field has a zero curl at the all point of space. That is why such field are known as non-curl or lamellar vector field. For example, since for electrostatic field E vector curl E vector is equal to 0, therefore the curl is a measure of how much the vector curl around the point. Question example: suppose a person is standing at the edge of a pond, sprinkle some sawdust or pine needles are sometimes on the surface. If the material spreads out, then a person drops in it on a point of positive divergence. Now float a small cork with a toothpick pointing radially outward. If it starts to turn, then it placed at a plane of non-zero curl. A point of large curl is known as whirlpool. A point of positive divergence is called a source of Poinsted, and a point of negative charge divergence is a sink or drain. Laplacian of a scalar field. The Laplacian operator is a composite of gradient and divergence operator. The Laplacian of a scalar field psi is divergence of gradient of scalar field psi and is written as Laplacian of psi is equal to divergence into gradient psi is equal to del backward vector into backward substitution psi is equal to del square psi. That is del square psi is equal to I del by del x plus j del by del y plus k del by del z question 1 into I del psi by del x plus j del psi by del y plus k del psi by del z. Del square psi is equal to del square psi बटा del x square plus del square psi बटा del y square plus del square psi बटा del z square 74. This is the Laplacian of a scalar field. Psi is Cartesian coordinate system. The Laplacian of a scalar field psi is in cylindrical and spherical coordinate system are given as in cylindrical coordinate system. Del square psi is equal to 1 by r del by del r. क्वेश्चन में r del psi बटा del r प्लस 1 by r स्क्वायर del स्क्वायर psi बटा del थीटा स्क्वायर प्लस del स्क्वायर psi बटा del z स्क्वायर 77. इन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम del स्क्वायर psi is equal to 1 by r स्क्वायर del by del r. क्वेश्चन में r स्क्वायर del psi बटा del r प्लस 1 by r स्क्वायर sin थीटा डी बाई डेभा थीटा. क्वेश्चन में साइन थीटा डेभा साई बाई डेभा थीटा प्लस 1 बाई आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डेल स्क्वायर साई बटा डेल साई स्क्वायर. 76 टाइप्स ऑफ वेक्टर फील्ड. बाई द वर्ड्स वी मीन्स ए पार्टिकुलर प्रॉपर्टीज ऑफ स्पेस दैट इज द ensemble ऑफ मेजरमेंट ऑफ ए particular properties. Lamellar field are solenoidal and rotational field. If divergence A is equal to 0, curl A is equal to 0, then curl A is equal to 0 is equal to curl A vector is equal to gradient phi. Divergence gradient phi is equal to del square phi is equal to 0. This equation is called Laplacian equation, and the such field are called Laplacian field. Example: electrostatic field in free space.
gravitational field in free space, equilibrium thermal field, magnetic field in current free region, statics current field within the linear homogeneous isotrope conductor etc. Irrotational but not solenoidal field. Curl A vector is equal to 0 but divergence A vector not equal to 0. Curl A vector is equal to 0 tends to A vector is equal to gradient psi but divergence gradient psi is not equal to 0 tends to del square psi is not equal to 0. This equation is called the Poisson equation and such field are called Poissonal field. Example: electrostatic field in a charged medium, electrons in a thermionic tube, gravitational force inside a mass etc. Solenoidal but not irrotational field. If divergence A vector is equal to 0 but curl A vector not equal to 0, divergence A vector is equal to 0, A vector is equal to curl B vector, divergence A vector is equal to divergence curl B vector is equal to 0 and curl A vector is equal to curl B vector not equal to 0, gradient divergence B vector minus del square B vector not equal to 0. If however divergence B vector is equal to 0, then the above equation reduced to del square B vector not equal to 0. This equation is similar to Poisson equation but in terms of vector potential. Example: magnetic field within a conductor carrying a steady current, rotational motion of an incompressible fluid, time varying electromagnetic in a charge free and current free region etc. Neither rotational nor solenoidal field. If curl A vector not equal to 0 and divergence A vector is equal to not equal to 0, in case A vector is equal to gradient plus curl B vector, divergence A vector is equal to divergence gradient psi plus divergence curl B vector not equal to 0, but divergence curl B vector is equal to 0, divergence gradient psi not equal to 0. This is Poisson equation to determine phi. Also curl A vector is equal to curl gradient phi plus curl gradient B vector not equal to 0, curl gradient phi is equal to 0, curl gradient B vector not equal to 0. This can be reduced to del square B vector not equal to 0 by assuming divergence B vector is equal to 0 and then solving for B vector. This is the most generalized type of field. Such a general field vector can be decomposed into field, one being laminar with the scalar potential phi and the other solenoidal with the vector potential B vector. This is sometimes known as Hamilton theorem. Example: rotational motion of compressible fluids. 1.86 Gauss divergence theorem. Gauss divergence theorem enable us to transform value integrals of divergence of vectors field into the surface integrals of the vector field and vice versa. The statement of the Gauss divergence theorem could be given as the flux of a vector field A vector over any closed surface S is the equal to the volume surface of the divergence of vector field over the volume V enclosed by the surface S, that is triple semacolon divergence A vector question 1 dV is equal to double semacolon S A vector into ds, or triple semacolon V del vector into A vector question 1 dV is equal to double semacolon A vector into n cap ds. Stokes theorem. Stokes theorem transform the surface integral of curve of the vector field A vector into the line integrals of that vector field A vector over the boundary C that over surface and vice versa. The statement of the Stokes curve theorem could be given as the flux of the curve of a vector function A vector over any surface S of any shape is equal to the line integrals of the vector field A vector over the boundary C of the surface, that is double semacolon S curl A vector into ds vector is equal to semacolon A vector into dr vector. Important formulas.
if psi comma phi are scalar point function and a vector dot comma b vector are the vector point function, then पहला डेल वेक्टर क्वेश्चन में फाई प्लस साई इक्वल टू डेल वेक्टर साई प्लस डेल वेक्टर साई, दूसरा डेल वेक्टर क्वेश्चन में फाई प्लस साई, फाई इंटू साई इक्वल टू फाई डेल वेक्टर साई प्लस साई डेल वेक्टर फाई, तीसरा डाइवर्जेंस क्वेश्चन में ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल टू डाइवर्जेंस ए वेक्टर प्लस डाइवर्जेंस बी वेक्टर, कर्ल क्वेश्चन में ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल टू कर्ल ए वेक्टर प्लस कर्ल बी वेक्टर, ग्रेडियंट ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर क्रॉस क्वेश्चन में डेल वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर इंटू डेल वेक्टर क्वेश्चन वन बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्रॉस क्वेश्चन में डेल वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इंटू डेल वेक्टर क्वेश्चन में ए वेक्टर। छठवां डाइवर्जेंस ए वेक्टर फाई इक्वल टू फाई डाइवर्जेंस ए वेक्टर प्लस ए वेक्टर इंटू ग्रेडियंट फाई। सातवां कर्ल क्वेश्चन में फाई ए वेक्टर इक्वल टू फाई कर्ल ए वेक्टर प्लस ग्रेडियंट फाई क्रॉस ए वेक्टर। आठवां डाइवर्जेंस कर्ल ए वेक्टर इक्वल टू जीरो, कर्ल ग्रेडियंट जीरो इक्वल टू जीरो, डाइवर्जेंस क्वेश्चन में ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल टू बी वेक्टर इंटू कर्ल ए वेक्टर माइनस ए वेक्टर इंटू कर्ल बी वेक्टर। ग्यारहवां कर्ल क्वेश्चन में ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल टू बी वेक्टर डॉट डेल क्वेश्चन में ए वेक्टर माइनस क्वेश्चन में ए वेक्टर इंटू डेल क्वेश्चन में बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर डाइवर्जेंस बी वेक्टर माइनस बी वेक्टर डाइवर्जेंस ए वेक्टर। 12 कर्ल ए वेक्टर इक्वल टू ग्रेडियंट डाइवर्जेंस ए वेक्टर माइनस डेल स्क्वायर ए वेक्टर। 13वां डबल समाकलन यस ए वेक्टर इंटू एन कैप डी एस इक्वल टू ट्रिपल समाकलन भी डाइवर्जेंस ए वेक्टर डी भी। 14वां समाकलन सी ए वेक्टर इंटू डी एल इक्वल टू डबल समाकलन यस कर्ल ए वेक्टर इंटू एन कैप डी एस। 15वां समाकलन यस फाई एन कैप डी एस इक्वल टू ट्रिपल समाकलन भी डेल वेक्टर फाई डी भी। 16वां समाकलन यस ए वेक्टर क्वेश्चन में बी वेक्टर इंटू एन कैप क्वेश्चन वन डी एस इक्वल टू ट्रिपल समाकलन भी ए वेक्टर क्वेश्चन में डाइवर्जेंस बी वेक्टर क्वेश्चन वन डी भी प्लस ट्रिपल समाकलन भी बी वेक्टर इंटू डेल वेक्टर क्वेश्चन वन ए वेक्टर डी भी। 17वां डबल समाकलन एन कैप क्रॉस ए वेक्टर डी एस इक्वल टू डबल समाकलन ट्रिपल समाकलन भी कर ले ए वेक्टर डाइवर्जेंस डी भी। 18वां समाकलन सी फाई डेल एल इक्वल टू डबल समाकलन यस एन कैप गुणे डेल बैकवर्ड वेक्टर साई डी एस। प्रॉब्लम गिवन एफ वेक्टर इक्वल टू -2i कैप -5j कैप -4k कैप एंड जी वेक्टर इक्वल टू 3i कैप प्लस 5j कैप प्लस 2k कैप। फाइंड पहला एफ वेक्टर इंटू जी वेक्टर, दूसरा एंगल बिटवीन एफ एंड जी, तीसरा लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ एफ वेक्टर ऑन जी वेक्टर प्रोजेक्शन ऑफ एफ वेक्टर ऑन जी। सॉल्यूशन एफ वेक्टर इंटू जी वेक्टर इक्वल टू क्वेश्चन में -2i कैप प्लस -5j कैप -4k कैप क्वेश्चन वन, दूसरे क्वेश्चन में 3i कैप प्लस 5j कैप प्लस 2k कैप क्वेश्चन वन इक्वल टू -6 -25 -8 इक्वल टू -39 यूनिट। एंड एंगल बिटवीन एफ वेक्टर एंड जी वेक्टर थीटा इक्वल टू cos इनवर्स एफ वेक्टर इंटू जी वेक्टर बटा के मॉड ऑफ एफ वेक्टर जी वेक्टर इक्वल टू cos इनवर्स -39 बटा के अंडर रूट में 4 + 25 + 16 अंडर रूट में 9 + 25 + 4 इक्वल टू cos इनवर्स -39 बटा के अंडर रूट में 45 अंडर रूट में 38 इक्वल टू cos इनवर्स -39 बटा के 6.7 पूरे 6.16 इक्वल टू cos इनवर्स -39 बटा के 41.36 इक्वल टू cos इनवर्स क्वेश्चन में -0.493 और 0.943 इक्वल टू -160.58 इक्वल टू 19.42। तीसरा लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ एफ वेक्टर एंड जी वेक्टर मॉड ऑफ एफ वेक्टर इंटू जी कैप इक्वल टू मॉड ऑफ एफ वेक्टर इंटू जी वेक्टर बटा के मॉड ऑफ जी वेक्टर इक्वल टू -39 बटा के अंडर रूट में 38 मॉड ऑफ इक्वल टू -6.327। चौथा वेक्टर प्रोजेक्शन ऑफ एफ वेक्टर ऑन जी एफ वेक्टर इंटू जी वेक्टर बटा के मॉड ऑफ जी वेक्टर मॉड ऑफ जी वेक्टर बटा के मॉड ऑफ जी वेक्टर इक्वल टू -6.327 3i का प्लस 5j का प्लस 2k का बटा के 9 अंडर रूट में 9 + 25 + 4 इक्वल टू -1.026 क्वेश्चन वन क्वेश्चन में दूसरे क्वेश्चन में 3i का प्लस 5j का प्लस 2k का इक्वल टू -3.079 i का -5.13 j का -2.053 k का। प्रॉब्लम टू गिवन द पॉइंट पी क्वेश्चन में r इक्वल टू 5 थीटा इक्वल टू 60 z इक्वल टू 2 एंड क्यू क्वेश्चन में r इक्वल टू 2 थीटा इक्वल टू 110 एंड z इक्वल टू -1। पहला फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन p एंड q दैट इज r सफिक्स में pq
दूसरा द गिव ए यूनिट वेक्टर इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट एट पी डायरेक्शन टुवर्ड क्यू। तीसरा गिव ए यूनिट वेक्टर इन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स एट पी डायरेक्टेड टुवर्ड क्यू। सॉल्यूशन इन ए सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट इट इज गिवन दैट पी 5 डिग्री 60 अंश कामा डू एंड क्यू डू 110 अंश माइनस 1 पी इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट 5 cos 60 अंश कामा 5 sin 60 अंश कामा डू इक्वल टू 2.5 कामा 4.33 कामा डू एज एक्स इक्वल टू आर कास थीटा कामा वाई इक्वल टू आर साइन थीटा कामा जेड इक्वल टू जेड। क्यू इज ए कार्टेशियन कोऑर्डिनेट 2 cos 110 अंश कामा 2 sin 110 अंश कामा -1 क्वेश्चन 1 इक्वल टू क्वेश्चन में -0.68 कामा 1.88 कामा -1 एज एक्स इक्वल टू आर कास थीटा कामा वाई इक्वल टू आर साइन थीटा कामा जेड इक्वल टू जेड। 10 आर से इसमें पी वेक्टर इक्वल टू 2.5 आई के प्लस 4.33 जे के प्लस 2.2 के कैप एंड आर से इसमें क्यू वेक्टर इक्वल टू -0.68 आई के प्लस 1.88 जे के माइनस के पहला देयरफॉर आर से इसमें पी क्यू वेक्टर इक्वल टू आर से इसमें क्यू वेक्टर माइनस आर से इसमें पी वेक्टर इक्वल टू -3.18 आई कैप माइनस 2.45 जे कैप माइनस 3 के कैप। सो द मैग्नीट्यूड इक्वल टू मॉड ऑफ आर वेक्टर पी क्यू इक्वल टू अंडर रूट में क्वेश्चन में -3.18 स्क्वायर प्लस -2.48 स्क्वायर -3 स्क्वायर इक्वल टू 5.01 यूनिट। नाउ द यूनिट वेक्टर इज आर से पी क्यू बटा के मॉड ऑफ आर से पी क्यू वेक्टर पी क्यू कैप इक्वल टू -3.18 आई कैप माइनस 2.45 जे कैप माइनस 3 के कैप बटा के 5.01 इक्वल टू -0.63 आई कैप माइनस 0.49 जे कैप माइनस 0.60 के कैप। तीसरा का आई कैप जे कैप के कैप इक्वल टू कास थीटा साइन थीटा 0 माइनस साइन थीटा कास थीटा 0 0 0 1। एक क्वेश्चन दूसरे क्वेश्चन में आर कैप थीटा कैप जेड कैप इक्वल टू कास थीटा आर कैप माइनस साइन थीटा थीटा कैप साइन थीटा आर कैप प्लस कास थीटा थीटा कैप जेड कैप टेंस टू आई कैप इक्वल टू कास थीटा आर कैप माइनस साइन थीटा थीटा कैप इक्वल टू 0.5 आर कैप माइनस 0.86 थीटा कैप क्वेश्चन में एज थीटा इक्वल टू 60 अंश फ्रॉम पॉइंट पी जे कैप इक्वल टू साइन थीटा आर कैप प्लस कास थीटा कैप प्लस इक्वल टू 0.86 आर कैप प्लस 0.5 थीटा कैप के कैप इक्वल टू जेड कैप पी क्यू इक्वल टू माइनस 0.36 क्वेश्चन में 0.5 आर कैप माइनस 0.86 थीटा कैप क्वेश्चन 1 माइनस 0.49 क्वेश्चन में थीटा 0.86 आर कैप प्लस 0.5 थीटा कैप क्वेश्चन 1 माइनस 0.6 जे कैप इक्वल टू माइनस 0.736 आर कैप प्लस 0.297 थीटा कैप माइनस 0.6 जे कैप। प्रॉब्लम थी गिवन पॉइंट्स ई क्वेश्चन में 2,5,1 कामा या क्वेश्चन में -1 4 -1 एंड जी क्वेश्चन में 3 -2 फाइंड यूनिट वेक्टर डायरेक्टेड फ्रॉम ई टू एफ। दूसरा एंगल बिटवीन आर सर्फेस में ई एफ एंड आर सर्फेस में ई जी। तीसरा लेंथ ऑफ परिमीटर ऑफ डेल ई एफ जी। चौथा स्केलर प्रोडक्शन ऑफ आर वेक्टर ई सर्फेस आर वेक्टर सर्फेस में ई एफ एंड आर वेक्टर सर्फेस में ई जी। सॉल्यूशन फॉर द गिवन पॉइंट ई वेक्टर एंड एफ वेक्टर एफ वेक्टर कोड बी गिवन एज ये वेक्टर इक्वल टू -3 आई कैप माइनस जे कैप माइनस 3 के कैप एंड द वेक्टर ई जी वेक्टर इक्वल टू आई कैप माइनस 7 जे कैप प्लस 3 के कैप। पहला यूनिट वेक्टर डायरेक्टर फ्रॉम ई टू एफ ई सर्फेस में एफ कैप इक्वल टू ई एफ वेक्टर बटा के माडा बी एफ वेक्टर इक्वल टू -3 आई कैप माइनस जे कैप माइनस 3 के कैप बटा के 4.36 इक्वल टू -0.69 आई कैप माइनस 0.22 जे कैप माइनस 0.68 के कैप। दूसरा एंगल बिटवीन ई एफ वेक्टर एंड ई जी वेक्टर इक्वल टू कास इनवर्स माड ऑफ आर सर्फेस में ई एफ वेक्टर इंटू आर सर्फेस में ई जी वेक्टर बटा के माड ऑफ आर सर्फेस में ई एफ वेक्टर माड ऑफ आर सर्फेस में ई जी वेक्टर इक्वल टू कास इनवर्स -3 + 7 - 9 बटा के अंडर रूट में 19 अंडर रूट में 49 इक्वल टू 98.58 अंश। तीसरा परिमीटर इक्वल टू माड ऑफ ई वेक्टर प्लस एफ जी वेक्टर प्लस जी इक्वल टू अंडर रूट में 19 प्लस 59 प्लस अंडर रूट में 88 इक्वल टू 21.42। एफ ई जी स्केलर प्रोडक्शन ऑफ आर सर्फेस में ई एफ वेक्टर ऑन आर सर्फेस में ई जी वेक्टर इक्वल टू आर सर्फेस में ई एफ वेक्टर इंटू आर सर्फेस में ई जी वेक्टर कैप इक्वल टू आर सर्फेस में ई एफ वेक्टर इंटू आर सर्फेस में ई जी बटा के माड ऑफ आर सर्फेस में ई जी ट्रिंगल फार्म बाय द वेक्टर ई वेक्टर कामा एफ वेक्टर एंड जी वेक्टर।
इक्वल टू -3 क्वेश्चन में प्लस -1 इंटू -7 प्लस -3 इंटू +3 बटा के अंडर रूट में 1² प्लस -7² प्लस 3² इक्वल टू -7 प्लस -3 प्लस 7 प्लस 9 बटा के 5 9 इक्वल टू -0.651।